بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں بساط اور میں ہوں شکیل رامے. ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم ڈسکس کیا تھا کہ جو ابھی ورلڈ اکنامک فورم ہوا ہے اس میں بہت سی چینجز نظر آئیں. ہم نے دیکھا کہ جو ٹریڈ کے سٹرکچرز ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں، اکانومی کے سٹرکچرز چینج ہو رہے ہیں. میں گلوبل اکانومی کی اور گلوبل ٹریڈ کی بات کر رہا ہوں، مگر اس میں ایک دو چیزیں اور بھی ہوئی ہیں. ڈیوورس کے بعد اگر ہم ایک چیز دیکھیں کہ اس کے فوراً بعد ایک تانتا بن گیا ہے ورلڈ لیڈر کا، جو کہ چائنا کی طرف جن نے رخ کیا ہے، چاہے وہ کینیڈین پرائم منسٹر ہوں، چاہے وہ فن لینڈ کے پرائم منسٹر ہوں یا یو کے ہوں. اور ابھی جو نیا اس منتھ میں یعنی کہ فیبروری میں ابھی ہم نے سنا ہے کہ جرمن چانسلر بھی وزٹ کر رہے ہیں. اور اپریل میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ چیمپئن ہے یو ایس سے، جو کہ چیمپئن تھا ورلڈ ٹریڈ کا یا ورلڈ اکانومی کا یا ورلڈ آرڈر کا، وہ بھی چائنا کو یعنی کہ وزٹ کر رہے ہیں. اس کنٹیکسٹ میں نظر آ رہا ہے کہ ایک نیا گلوبل آرڈر بن رہا ہے. سملٹینیسلی اگر ہم دیکھیں تو ریجن کی جب ہم بات کریں تو ہمارے ہمسایہ ایران کے ساتھ امریکہ کا یعنی کہ جو چل رہا ہے، سب سے ایشو چل رہا ہے، چونکہ روز دوسرے دن کیا بلکہ دوسرے دن ہی روز پریزیڈنٹ ٹرمپ جو دھمکی دیتے ہیں ایران کو کہ میں نے حملہ کیا کہ کیا، تو اس سچویشن کے بھی بہت سارے امپیکٹ ہوں گے، نہ صرف پاکستان پہ یا ہمسایہ ممالک پہ بلکہ گلوبل ٹریڈ پہ. کیونکہ اگر جو کہ ہرموز ہے اگر وہ بند ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پورے دنیا کا جو کہ انرجی کی سپلائی چینز ہیں وہ متاثر ہوں گی، اور گلف کی جو فوڈ اینڈ مشینری اینڈ ادر چیزوں کی جو وہ امپورٹ کرتے ہیں وہ متاثر ہوں گی. اس کنٹیکسٹ میں آج ہم بات کر رہے ہوں گے کہ کیا واقعہ ہی نیا آرڈر بن رہا ہے؟ اگر بن رہا ہے تو اس کو ہم کس پرائے میں دیکھیں گے؟ اور دوسرا کہ کیا امریکہ واقعہ ہی ایران پہ حملہ کرے گا؟ اگر کرے گا تو اس کے کیا امپیکٹس ہوں گے؟ تو اس کے لیے ہم نے دو معزز مہمانوں کو آج مدعو کیا ہوا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں امبیسڈر نغمانہ ہاشمی صاحبہ. آپ سفیر تھیں پاکستان کی برسلز میں، آپ پاکستان کی سفیر تھی چائنا میں. یہ دو بڑے امپورٹنٹ اسٹیشن ہوتے ہیں کسی بھی سفارتکاری کے لیے. اور اس کے علاوہ آپ نے ایک بڑا لگزریس کہ آپ نے ڈپلومیٹک کیریئر گزارا ہوا ہے، اور آج کل ایک اکنامک اور ریجنل کنیکٹیوٹی کی ایک تھنک ٹینک کی روح رواں ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسین عسکری صاحب. ہی از بیسڈ ان سویڈن. He is the vice chairman of BRICS Institute in Sweden, but he originally belongs to Iraq. He has a very close eye on the Middle East, especially on the Iraq issues and the Iran issues. So that's why we have invited them. So welcome both of you. So madam, میں آپ سے سٹارٹ کروں گا. جیسے کہ میں نے ابھی بات کر رہا تھا کہ یعنی کہ ڈیوورس کے بعد یعنی کہ جو یہ ورلڈ اکنامک فورم ہوا، بلکہ اس سے پہلے بھی ایک تانتا بندھا ہوا ہے گلوبل لیڈرز کا چائنا کو وزٹ کرنے کا. آپ اس کو کس پیرائے میں دیکھتی ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا، اور جس موضوع کو آپ نے آج چھیڑا ہے اپنے پروگرام میں، یہ نہ صرف بہت اہم ہے دنیا کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے اور ہمارے خطے کے لیے بھی بہت ہی اہم موضوع ہے. اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو پرانا ورلڈ آرڈر تھا وہ اب بالکل کرمبل ہو رہا ہے، بلکہ ایسا کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس میں آپ ایک قسم کا رپچر دیکھ رہے ہیں. بالکل، کہ پہلے کینیڈین پرائم منسٹر نے بھی ابھی جو بات کی تھی ابھی ڈیوورس پہ، جی یہی انہوں نے بھی کہا تھا، اور وہ بالکل صحیح انہوں نے کہا تھا کہ ایک رپچر ہو رہا ہے. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. نیچرلی ہم سب ان سے واقف ہیں کہ کیا ہوا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اور یہ جو ورلڈ آرڈر تھا یہ کس نے بنایا تھا، اور جب تک انہیں وہ سرو کرتا رہا اور وہ ان کو فائدہ دیتا رہا تو تھوڑا بہت اس کا فال آؤٹ اچھا جو ہے اس کو کنٹینیو رکھا انہوں نے، ملتا رہا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ورلڈ آرڈر اب جو ہے ان کے کام کا نہیں رہا، اور اس سے تو باقی جو ممالک ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور خاص طور پہ دیکھیں بلکہ کچھ ممالک زیادہ اٹھا رہے ہیں، بلکہ کچھ ممالک زیادہ اٹھا گئے سسٹم سے فائدہ. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ دیکھیں ایک سائیکلیکل چینج ہوتی ہے ہسٹری میں. امریکہ ابھرا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اور اس کے جو آپ کا یورپ تھا وہ نیچے چلا گیا. اب آہستہ آہستہ امریکہ جو ہے وہ ایک سیچوریشن پوائنٹ پہ آ چکا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کوئی امپائر بھی 250 سال سے زیادہ
एक आप हिस्ट्री का एवरेज है, अपनी फुल स्केल पे नहीं रहती, उसके बाद नीचे आना शुरू हो बिल्कुल। जाती है। तो ये अमेरिका के साथ भी वही हो रहा है, लेकिन इस दफा फर्क सिर्फ ये है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, दुनिया इस कदर की तरक्की कर चुकी है कि रशिया और चाइना की जो रिसर्जेंस हुई है, और ख़ास तौर पे जो चाइना की राइज़ हुई है, जिसको ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और उनका ना सिर्फ उनको इकोनॉमिकली देखें, बेसिकली तो वो आप तो इकोनॉमिस्ट हैं, वो बाइंग पावर पैरिटी में तो बहुत अरसे से उनको परचेजिंग पावर तो उनकी परचेजिंग पावर तो वैसे भी अभी बहुत ज़रा इशू बना हुआ है, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी यूरोप में। जी, तो उनको सरपास कर दिया है, टेक्नोलॉजी में सरपास कर दिया है, स्ट्रेटजी में सरपास कर दिया है, एआई में सरपास कर दिया है। तो अब जाहिर सी बात है कि एक बहुत सख्त परेशानी भी है उनको, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, उनका अंदाज़े सियासत भी आपको पता है कि बहुत मुख्तलिफ है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत एक्सप्लॉइटेटिव है, बल्कि अंदाज़े सियासत बहुत बुलिंग है, बल्कि अंदाज़े सियासत नहीं है। मुझे तो कभी कभी लगता है ये बचकाना सी बरकतें होती हैं, आज मेरा दिल नहीं कर रहा इस खिलौने से खेलूंगा तो कल मैं उस खिलौने से खेलूंगा। अच्छा मैम, हम आपकी तरफ दोबारा आते हैं, अभी हम डॉक्टर हसैन की तरफ भी जाते हैं। हसैन, व्हेन यू लुक एट अ नंबर ऑफ international leaders, especially from the Europe, but the powerful countries which were used to be considered powerful, like the UK, Canada, they are traveling to China. And we are expecting in February, the German Chancellor would be in China. After that, in April, the President Trump would be in China. How you see this whole context? How the world is evolving? Yeah, I think this is a very, very interesting situation we have in the world. I mean, to put it in context, it's useful to understand things if we put them in the larger context, and the question of China, of course, is very central. As I have been repeating recently, we have an era ending, an era which lasted 500 years since the discovery of the Americas by Columbus, and the finding the pathway to the Indian Ocean by the Portuguese, and so on and so forth. So this era of colonization, big European empires, and dominance of the West in industrial, economic, military, strategic control over the whole world has ended now. It ended, specifically last year. It has been going on for a while, but last year when China, a developing country, forced the world's #1 power from the West, the United States, to pedal back its decision to impose tariffs on China. So how that happened? If you can also a little bit explain this one for the audience. Yes. Yeah, because we have what we call economic gravitation center has moved from the West to the East. Through the past 40 years of China's economic development, but also its neighborhood with the ASEAN, for example, and now many other nations like in the BRICS, the global South, and Russia, of course. So the gravitational pull of the world has moved eastward, and China has managed to acquire the economic power, the technology, the monetary prowess to be able to challenge the #1 power in the world, and force it, not using military force, not using political pressure, but using economic. But there was another indicator which helped China. So rare earth metals, the control of China over the rare earth metals, its undisputed superpower China is there. That also helped China to force USA to pedal back. Yeah, the key shift happened when China imposed restrictions on rare earth metals and magnets, which are crucial for all modern industries, including the arms industry in the United States, but also in Europe. Communications. You remember when the Dutch government, under pressure from the United States, took over the Nexperia, which produces chips. And that, by the way, that was very stupid, I think, very stupid action.
Yes, because most of the European car industry depends on it. So they had to shut down, and then they had to reverse their policy. So China, through many years of hard work, consistent work, planning, and economic development, scientific, technological development, have imposed a new order in the world. So you believe, so China has already developed a new world order. Yes, it has been going on for a while, but last year this thing came to the surface. Okay. So Hassan, I will come back to you. Hassan, I will come back to you. I have to include also the Ambassador Hashmi. So, ma'am, when you look at that, other indicators, especially in the context of the region, a number of things are also happening in the region. मगर हम अगर बात करें अपने रीजन की, तो कुछ दिन पहले जो यूरोपीय यूनियन के थे वो लोग थे, वो इधर यूएसए में इंडिया में बैठे हुए थे. अगर एक तरफ देखें तो इंडिया ब्रिक्स का बड़ा चैंपियन बनने की कोशिश करता है, कभी बात करता है मैं एससीओ का मेंबर हूँ, कभी कुछ करने को, और दूसरी तरफ करता है कि मैं जो कि है कि मैं जो कोई यूरोपियन यूनियन है या वेस्ट है मैं उसके साथ भी बैठूँ. आप कैसे देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? देखिए, whether we like it or not, इंडिया एक बड़ी ताकत तो है, ठीक है, और एक बहुत बड़ी मार्केट भी है, और हमें हाँ मार्केट है, ताकत का शायद हम लफ्ज यूज ना कर सकें, मार्केट है नहीं, ताकत भी है बहुत, मतलब ताकत का मतलब सिर्फ मिलिट्री नहीं होता, और बहुत सारी चीजें भी तो होता है ना. तो एक ये आप तो डिनाई तो नहीं ये बात कर सकते, और आप इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि चाइना और इंडिया की अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ देखें तो वो 43.6% ऑफ द वर्ल्ड ग्रोथ है, और एशिया पैसिफिक की जो है वो 50% से ज्यादा की है. तो जाहिर सी बात है कि अगर ये दो मुल्क मिलके 43.6% इकोनॉमिक ग्रोथ अगर दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते. इसमें जो फर्क है ना, जो इंडिया की तरफ से ना 15 से 17% कंट्रीब्यूट करता है, जो रेस्ट है सारे का सारा वो चाइना पे आता है. देख लेना, अमेरिका 6 करता है, तो मेरी अगर 9.9 दे तो मैं बात खत्म कर लूं. तो जाहिर सी बात है, और इनके बड़े पुराने रिलेशनशिप्स हैं, बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, और उसके बाद इस वक्त जो एक रिफ्ट पैदा हो रही है अमेरिका में और उनके यूरोपियन पार्टनर्स में, क्योंकि यूरोप का बहुत अरसे से बड़ा सटल एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा है बहुत सारी बातों पे अमेरिका के साथ. अब मैंने तो क्योंकि यूरोपियन यूनियन में भी 2 टर्म्स काटी हैं एज सफीर, तो मुझे बहुत अच्छी तरह इस बात का अंदाज़ा है कि ये जो अंडरलाइंग रिफ्ट थी वो बिल्कुल सरफेस पे आ गई है, और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि एक तांता बंधा होता है यूरोपियन ममालिक का चाइना की तरफ, और बहुत सारे इश्यूज में वो चाइना के साथ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उनकी लिंकेज इकोनॉमी की जो है और उनके जो मसाइल का और डेवलपमेंट का जो हल है वो अमेरिका के पास नहीं है. वो इस वक्त फील कर रहे हैं कि अमेरिका की लड़ाइयां लड़ के उन्होंने अपना काफी सत्यानाश कर लिया है, और इस वक्त भी अमेरिका सिर्फ उनको बुली कर रहा है और कह रहा है कि जी आप मजीद पैसे हमारी लड़ाइयों में डालें, और वरना आपको हम एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है. तो उनके लिए सिर्फ एक उभरती हुई ताकत उनको नजर आ रही है. प्लीज अंडरस्टैंड कि यूरोप और चाइना जो है वो सिविलाइजेशनल स्टेट्स है, इंडिया भी सिविलाइजेशनल स्टेट है, हम भी सिविलाइजेशनल स्टेट है, अमेरिका सिविलाइजेशनल स्टेट नहीं है. तो उनका उस तरह का नी जर्क रिएक्शन होता है. ये यहाँ पर एक सवाल है जो सॉरी मैं आपको कथा कर रहा हूँ कि जब यूरोप बात करता है ह्यूमन राइट्स की, या कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, रिलीजियस स्पीच यानी कि फ्रीडम की बात करता है, इंडिया में तो ये कोई चीज़ें नहीं. हमने देखा है कि हिंदुत्व ने जो सारा किया है, क्या इकोनॉमिक गोल की वजह से यूरोप जो है कि ये तमाम अपने जो वैल्यूज़ या असूल बयान करता है, पूरी दुनिया को पढ़ाता है, उसे विड्रा कर रहे हैं? देखिए जी, वो एक बहुत ही अलग डिबेट है, इस पे मैंने लिखा भी बहुत है. नहीं, हमें तो उन्होंने देखे ना, हमें अभी भी उन्होंने कहा है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, कुछ मसाइल हो रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के, तो हमने जो आपको GSP प्लस दिया हुआ है वो उस पर आप ध्यान दें. तो क्या मुझे अगर आप बात खत्म करने की इजाजत दें तो मैं फिर आपका सवाल का जवाब दे देती हूं. जी देखिए,
یہ جہاں تک جس طرح آج کل ٹیرفز جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پہ یوز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی طرح ہیومن رائٹس بھی اس کی بھی بڑی ہسٹری ہے کہ کیوں اس کو ایجنڈے پہ ڈالا گیا ہے اور کیسے ان کو ایک وائٹ مینس کمپلیکس بھی ہے، ان کو ایک پرابلم بھی ہے کہ انہوں نے جس قدر کا ظلم کیا اتنی صدیاں لوگوں پہ دنیا میں کولونائزیشن کے درمیان، وہ کمپلیکس بھی ان کا جو ہے وہ ہینگ اوور ہے ابھی، تو وہ کسی نہ کسی طرح وہ دھبے دھونا چاہتے ہیں، اور نیو کلونیلزم کا یہ ایک ٹول ہے، جہاں ان کو سوٹ کرتا ہے وہاں وہ لگا دیتے، جہاں نہیں سوٹ کرتا نہیں لگاتے. اور اس وقت انڈیا کے جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں اور جو ان کے ہاں ڈیموکریسی ایروڈ ہو رہی ہے، اور جس قسم کا ایک فنڈامنٹلزم کا وہاں نشہ چڑھا ہوا ہے، وہ اس وقت یورپ کے گلے میں توق بنا ہوا ہے. اس لیے بنا ہوا ہے کہ وہ سارے چیزیں یہ اس کو کس طرح، اسی لیے آپ دیکھیں کہ یورپ میں اب بات بھی ہونی شروع کر دی ہے، اور یہ جو ابھی جب انہوں نے سکھ لیڈرز کو قتل کیا اور کئی جگہ ان کو قتل کرنے کی اور کوشش کی گئی، تو یورپ بھی بولا ہے، امریکہ بھی بولا ہے، سب بولے ہیں، اب بولنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ آگ ان کے گھر پہنچی ہے، کیونکہ آگ ان کے گھر پہنچی ہے، ان کے گھر پہنچی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک حد سے انڈیا کو آگے بڑا نہیں ہونے دیں گے. انہیں بھی بہت اچھی طرح پتا ہے کہ انڈینز کی سائیکی کیا ہے، وہ ان کو کبھی بھی لائبلٹی نہیں بننے دیں گے. اچھا میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. ابھی ہم نے حسین سے کوئی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں کہ حسین، so if you look at the regional context, or look through the regional lens, so most important event which is happening in this region is Iran and US war. As every day the US threaten to Iran, I will attack you, do this, and bring a long list of the wish, which are basically the wish list of Israel. But US continue to threaten Iran. How do you see this situation, the evolving situation in this region? So will Iran be attacked or not? If attacked, what will be the reaction of Iran? Well, I think this would be a total disaster, of course, if Iran is attacked by the US in military terms, because Iran's response will not be so, limited. Last time Iran replied by attacking Israel and showed that it has the tools to actually penetrate through the Israeli defenses. But this time it will be more comprehensive because there are many American bases in the region, maybe even attack American naval pieces in the sea. And the technology is there for the Iranians to use. But of course, I hope this will not happen because it will be a total disaster for everyone, because many countries in the region have warned the United States. I mean, Saudi Arabia has been very vocal. Yeah, very vocal about their, opposition to any attack on Iran. We have the other Gulf countries, Qatar, about Turkey, Egypt. Other countries have actually sent messages to the Trump administration that this will not be a limited thing. It will engulf everybody in a destructive process. So this is the situation. Then why Trump is insisting again and again? I think Trump, what he wishes to do is he can take some of the wish list from Israel that Iran will dismantle its nuclear program, it will dismantle its missile program, and also stop supporting other, so-called resistance movements in the region by doing nothing, at no cost for the United States, just threatening them to make Iranians concede, make these concessions so they are not attacked. I don't think the Iranians will accept that. The Iranians they are pragmatic. They do want to have negotiations. They have negotiations with the United States before, and they managed to get the Joint Comprehensive Plan of Action, the JCPOA, for the nuclear program. They allowed international inspectors in. So the Iranians are very pragmatic. They don't mind sitting at the table with the United States. You are sitting in Europe, in the heart of Europe, and you are running a very good institute, a leading institute on the BRI and other global changes. So what are the sentiments in the Europe? How the European, one is the governments and other is the people, how they are looking at this situation?
I think the governments of the European Union, except for Spain or Norway, which is not in the Union, but it's in the Western Europe, there are very few governments. I mean Europe. Yes, yes. In Europe, they lost the moral, stand they used to position themselves because of the situation in Gaza, because they did nothing to stop the genocide in Gaza, and they were exposed in front of their people as hypocrites. Rather, they helped Israel to conduct this genocide. Some of them did even support Israel, yes, and they at least, they didn't even in words try to support the Palestinian people or to end this situation. But the people in Europe, of course, the majority of people are against this policy, but they have very little to say to the governments. I mean, people have we do have democracies in Europe, but these are formalities. You go elect a government, and then the government can do whatever it wants in 4 years. That is very important. That is very interesting observation. It is a formality. A very interesting observation. Yeah, it's a lot of formalities, and but I mean, like somebody said, in Europe you can change the parties in government, but the policy is the same. In China, it's the same party, but the policies change. Evolve. Hassan, I will come back to you again with more questions, but right now I have to include Ambassador Hashmi here again. So, ma'am, جب آپ دیکھتی ہیں ابھی ایران کی جو سچویشن چل رہی ہے، جس طرح ہم بات کر رہے تھے میں اور حسین ابھی کہ وہاں پر کہ اگر ہر دوسرے دن ٹرمپ جو تھریٹن کرتا ہے ایران پہ حملے کے، تو جب آپ دیکھتی ہیں اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ حملہ ہو جاتا ہے، اس کا پاکستان پہ اور ریجن پہ کیا امپیکٹ ہوگا؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ حملہ کریں گے. آپ کے منہ میں گھی شکر ایسا ہی ہو انشاءاللہ. ہاں، یہ اسی طرح برنکمین شپ کرتے رہیں گے، کیونکہ اس دفعہ جیسے آپ کے دوسرے مہمان فرما رہے تھے کہ یہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے گا، یہ لمیٹڈ نہیں رہ سکے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اس پہ آئل مارکیٹ پہ بھی اس کا اثر پڑے گا، اس کا سپلائی چینز کے اوپر بھی اثر پڑے گا. اس کے یہاں اگر یہ خطے میں ایران پہ اگر حملہ ہو گیا تو یہ غزہ کی سچویشن سے زیادہ خطرناک ہوگا، کیونکہ پراکسی وارز شروع ہو جائیں گی. اس کے بعد ٹیررزم اور یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یہ ایکٹیو ہو جائیں گے. آلریڈی دیکھ رہے ہیں افغانستان میں یہ ہوا ہے. بالکل. اور یہ ہمارے لیے تو بہت ہی خطرناک ہے، اس لیے کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایران کے ساتھ ہمارا بہت بڑا بارڈر ہے اور ہمارے ان سے بہت ہی دیرینہ تعلقات ہیں، اور دونوں طرف جو ہے ایک ہی مطلب ریلیجس افینٹیز بھی ہیں. تو آپ نے دیکھا جب افغانستان میں پرابلم ہوا تو کس قدر 40 سال ہو گئے ہیں ہم اس کے آفٹر افیکٹ سے ابھی تک جان نہیں چھڑا سکے اور سفر کر رہے ہیں. تو خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کے حالات ایران میں ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے تو ہر لحاظ سے پرابلمٹک ہے. اور جو ہم چاہ رہے ہیں کہ جی اب پاکستان کی اڑان ہونے جا رہی ہے، اسی طرح آپ کو یاد ہوگا، آپ اگین یو آر این اکانومسٹ، کہ 79 میں ہم ٹیک آف سٹیج پہ تھے، بالکل اڑان کی سٹیج پہ تھے. اور افغانستان میں ٹربل شروع ہوا تو کیسے ہماری ساری اکنامک ڈیولپمنٹ منہ کے بل گر گئی. اور اسی طرح اگر ایران کا ہو جاتا ہے تو پھر جو ہمارے وہ ڈیزائر ہے ٹو ایکسپینڈ ویسٹ ورڈز اینڈ انگیج ویسٹ ورڈز، کیونکہ انڈیا اور ایسٹ تو انڈیا نے بلاک کیا ہوا ہے. تو اگر ہم نے کوئی اپنی کنیکٹیوٹی کرنی ہے، کوئی اپنی ٹریڈ بڑھانی ہے، کوئی اپنے لیے منڈیاں ڈھونڈنی ہے تو وہ ویسٹ ورڈ ہے. اور اگر ویسٹ ورڈ میں افغانستان کے ساتھ ساتھ ایران بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو دیکھیں ہمارا سارا جو ایک اکنامک ویژن اس پر ڈسکس ہو رہا ہے، جو پچھلے 40 سال سے ہمارا ہے کہ جی ہم ویسٹ ورڈ کھولیں اس کو، میم اگر ایک چیز آپ دیکھیں اگلے 40 سال کے لیے رک جائے گا. تو ناظرین یہاں پر ہم جائیں گے مختصر وقفے پہ، وقفے کے بعد آئیں گے تو ہم انہی ایشوز پہ دوبارہ بات کر رہے ہوں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे, हम सिलसिले को वहीं से शुरू करेंगे। आप एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे नाज़रीन भी यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि लास्ट टाइम जो कि इजराइल ने हमला किया तो पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा था, बल्कि ईरान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान वाहिद मुल्क था कि ईरान की पार्लियामेंट में यहाँ पर उनके प्रेसिडेंट ने जिस प्रोसेस को लीड किया, तशक्कर पाकिस्तान के नारे भी लगे। उसके बाद मसलसल उनकी टॉप लीडरशिप भी पाकिस्तान आई शुक्रिया अदा करने। अब जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है, इसमें पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर रहा है? देखें जी, मैं तो हुकूमत में नहीं हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकती। आपका एज एक्सपर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सपर्ट के। लेकिन जो मेरा ख्याल है, हमारे लिए ये बहुत ही एक फिर लम्हे फिक्रिया होगा, डिफिकल्ट होगा। हमें हर हाल में जो सही रास्ता होगा वो ये कि हम ईरान की तरह ईरान के साथ बिल्कुल उनके शाना बशाना खड़े हों इसमें। लेकिन जब ईरान इजराइल ने ईरान पे वो हमला किया था, तो आपको याद होगा उस वक्त हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ वो नहीं थे जो आज है। ठीक है, हम उस तरह एंगेज्ड नहीं थे यूरोपियंस के साथ और इनके साथ जैसे आज है। तो हमें बहुत ही सलीके से चलना पड़ेगा। इसमें अच्छी बात सिर्फ ये है कि सिंस देन ईरान और सऊदी अरेबिया की लिंकेज जो है वो अब बेहतर हो गई है। उनके सफारत खाने खुल गए, डिप्लोमेट, और उन्होंने बिल्कुल कह दिया है कि जी हम ना अपनी सरजमीन ना फिजा इस्तेमाल होने देंगे, खोलेंगे अमेरिका के लिए। और गल्फ ने स्टेट्स ने भी कहा है। तो हमें भी आई थिंक यही कहना पड़ेगा कि जी पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली बिल्कुल हम ईरान के साथ हैं। और बिकॉज ईरान पे अगर हमला होता है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। इसमें हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि हम ये परसेप्शन भी दें कि हम इस हमले को कंडोन कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, हम विशी वॉशी स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते। फर्म स्टेटमेंट्स देनी पड़ेंगी। You are absolutely right. Now we have to indulge Hassan in our discussion. As Hassan, so as the Madam Ambassador was telling, so Pakistan must have very clear stance and tell the world so where we stand. We are again against this supposed attack. But I want to ask you one thing. Hassan, if you are looking around the what's that name, Epstein files, so yesterday which has been released, so where it has been said very clearly, so Trump is compromised by Israel. In this context, if he is a compromise, how he will behave? Well, I think everybody now in the United States, I mean, the American people, American experts, they are saying that Trump's policy is not longer America first, it's Israel first. So in the United States, you have in the Republican Party, for example, around Trump and Trump himself, they are called Israel firsters. And then there's the MAGA base, which is America firsters. So they want America first. But Trump and his clique, his advisors, his ministers, and a majority in the Congress, they are Israel, pro-Israel. Israel is more important. And most of them are compromised, as you say. So this is one reason people suspect that why Trump has to do everything Israel and the Israeli lobby are asking him to do. But I think there is one issue which is related to the Iran situation I had to mention, is because there will be, not only in the region, there will be problems. For example, if the Hormuz Strait is closed for international oil trade, although most of the oil goes to the east, to China, Japan, Korea, India, and so on, the economic and financial system in the world is so interconnected and it's so fragile, especially the American financial market. Japan now have a huge financial crisis and bond markets could collapse. So the whole global financial and monetary system, or the transatlantic one at least, will collapse immediately. So this is something which makes I think the vulnerabilities of dollar, if you look at this point of the time, today the gold market also crashed in USA. So the vulnerability of dollar, if there is a war or there is some problem in the Hormuz, so will it impact the dollar decline? Oh, definitely, because there is a flight from the US dollar. I mean, even in the bond market, the US treasuries, many nations are dumping the treasuries, even here in Europe. We have Swedish and Norwegian
and Danish pension funds, they are selling their American assets. They are repatriating because they say the American market is no longer secure, especially with Trump and the leadership there. So the American dollar has been declining against the basket of international currencies very much. And there's also the fact that the American financial markets, which are so inflated, it's a lot of hot air. It's a big bubble pushed by it the is AI. it is not backed by the industrial output or the industrial base. No, it has nothing to do with the real economy. Even the AI thing, boom, the AI is too exaggerated. The value produced by the AI is not commensurable with the value in the markets they have. And the Chinese companies like DeepSeek, they showed that, Yes. with very simple tools, you can produce the same things. So this is a huge bubble, but the bubble is necessary to refinance the bond market. So because these major companies, the big financial companies who own the AI companies, they buy American bonds. They are the largest buyers of American bonds. And then they use the bonds to borrow more money from the banks, and the banks can borrow more money from the American central bank. So it's like a cycle within the United States that is keeping the image of the American economy growing. So any pinprick can blow the whole balloon. But no, they have also introduced the cryptocurrency, which is again worse than the paper currency. At least in the paper term we have some paper, but in the cryptocurrency you don't have anything. So I will come back to you, Hussain. So madam, अगर आप जिस तरह भी हसैन बात कर रहे थे कि अभी हम ईरान के जो इशू की बात है हम वो पॉलिटिकल करते हैं, सिक्योरिटी करते हैं, इसका इकानमी का बड़ा अहम यानी कि इसका एक्सपेक्ट है. आप माशाल्लाह भी एक यानी कि थिंक टैंक की रूह रवां हैं जो कि पाकिस्तान के इकनॉमिक लिंकेजेस और रीजनल कनेक्टिविटी पे बहुत ज़रा काम कर रहा है, बल्कि आप उसको एक स्पीयर हेड कर रही हैं. तो आप हमें बताइए कि जो आप देख रही हैं अपने इस वेंचर्स में कि कभी आप लोग किस जगह जा रहे हैं कभी कभी, तो आप कैसे देखते हैं कि खदान खासा हुर्मुज़ में प्रॉब्लम होता है, जो रीजनल कंसेप्ट है, जो कनेक्टिविटी कंसेप्ट जो आप लोग भी प्रमोट कर रहे हैं, वो कहाँ तक इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, वो तो मैंने आपको पहले कहा कि हम तो जो वेस्टवर्ड देख रहे हैं और रीजन को इंटीग्रेट करने का देख रहे हैं, क्योंकि हमारा तो ये सीपैक ऑपरेट हो ही नहीं सकता जब तक आपकी ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों कनेक्टिविटीज ना हो. लेकिन कम से कम वेस्टर्न तो खुले ना, इस वक्त तो दोनों ब्लॉक्ड है. और ईरान का अगर हो गया तो और ज्यादा नेचुरली प्रेशर आप पे आएगा. लेकिन इसकी एक और भी है, क्योंकि अगर ये अटैक हुआ तो बात सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तक तो फिर नहीं रह जाएगी ना, क्योंकि देखें यूरोप को जो तेल जाता है, अगर ईस्ट को तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाता है तो यूरोप को मलाका स्ट्रेट से निकल के जाता है, ठीक है ना. और वहाँ पर भी साउथ पैसिफिक में आपको पता है बहुत ज्यादा टेंशन्स है. और इस वक्त दोनों ईरान और वो रशिया और चाइना ईरान के साथ खड़े में, बल्कि यूरोप भी ईरान के साथ है, क्योंकि उनके भी इसीलिए आपने देखा जब JCPOA से अमेरिका निकल गया था तो यूरोपियन कंट्रीज नहीं निकली थी. उन्होंने अपना पूरा उसका मयाद पूरी की थी न्यूक्लियर एग्रीमेंट की, सिर्फ अमेरिका अलग होके बैठ गया था. तो अगर ये बढ़ा तो सिर्फ ये इस खित्ते तक नहीं रहेगी जंग, तो फिर ये इस जंग के शोले जो है वो साउथ पैसिफिक में भी आपको नजर आएंगे और जगह पे भी नजर आएंगे. और ज्यादा ये भी हो सकता है कि फिर इंडो पैसिफिक में भी ये चीज जिसको ऑफ कोर्स अमेरिका इंडो पैसिफिक कहता है, हम तो नहीं कहते, लेकिन ये कि हम एशिया पैसिफिक कहते हैं ये बात. हाँ, हम तो एशिया पैसिफिक कहते हैं कि वो खास तौर पे बिल्कुल वो फिर बात अगर हॉर्मुज़ बंद हो जाता है तो चीन के लिए तो रास्ता है गवादर से, बिल्कुल. तो देखिए उधर भी फिर आपके ऊपर प्रेशर आ सकता है. तो ये ईरान का जो मसला है ये सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा, ये मशरिक़ वस्ता में भी जाएगा, ये साउथ चाइना सी की तरफ भी जाएगा. ये ऑलरेडी आपने देखा है कि साउथ अमेरिका तक तो पहुंच ही गया है. तो मैंने जैसे कहा कि फिर और जगह भी प्रॉक्सी वॉर्स शुरू हो सकती हैं. आप ये तो नहीं हो सकता कि अमेरिका जो है बाकी लोगों के इंटरेस्ट को एक जगह हिट करेगा तो बाकी भी अब
1950-60 के ममालिक तो नहीं है ना, आजकल तो वो अमेरिका से भी आगे खड़े हुए हैं इन टर्म्स ऑफ देयर कैपेसिटी एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। सिक्योरिटी में अगर चाइना देखें तो बहुत आगे है इनसे अब। वो नहीं लड़ना चाहते, लेकिन जाहिर सी बात है जब बात बिल्कुल एग्जिस्टेंशियल हो जाएगी तो इस तरह तो चुप नहीं बैठेंगे, लड़ेंगे नहीं तो और चीजों के मैम यहाँ पर एक सवाल है, टूल्स यूज करेंगे, यहाँ पर एक सवाल है, यूज करेंगे। यहाँ एक सवाल है, आप जो बातें कर रही हैं, जो हुसैन बात कर रहा है, बड़ी यानी कि सेन वॉइसेस हैं, ये अक्लमंदी वाली बातें हैं, जब मॉरल पे जो आती हैं या जिसको मॉरल वैल्यूज़ भी कहते हैं कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। मगर अभी जो एप्स्टाइन फाइल्स का केस खुला है उसमें तो हमने देख लिया जो वेस्टर्न का जो स्पेशल भी अमेरिकन खुला है कि उनकी लीडरशिप के मॉरल्स क्या है, वो कहाँ तक कंप्रोमाइज्ड है। क्या जो लोग पीछे बैठे हुए हैं जिन्होंने इनको कंप्रोमाइज़ किया हुआ है, क्या इनको वो प्रेशराइज नहीं करेंगे कि उनके ऑब्जेक्टिव को सर्व करें और हमला करें? देखें, ये एप्स्टीन फाइल्स तो अब से नहीं चल रही है, तो बहुत अरसे से चल रही हैं, बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, बहुत लोगों ने इस्तीफे दिए हैं। और आप सही कह रहे हैं कि ये सारे मतलब कुछ आप कि खुद ऐसे ट्रेड्स होते हैं कि आप फंस जाते हैं, कुछ फंसाए भी जाते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब रियल पॉलिटिक्स की बात आ जाती है तो उस वक्त देखें कौन मॉरल्स की तरफ देख रहा है, कौन ह्यूमन राइट्स की तरफ देख रहा है। मोरालिटी तो आपकी इन चीज़ों में फिर नहीं रहती ना, कि जब आपका अपना कोर स्टेट हर एक के इंटरेस्ट होते हैं वो आ जाते हैं, और साथ साथ अगर लीडरशिप भी इतनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो फिर वो दो तरीके होते हैं, या तो वो अंडर प्रेशर आके और फिर रिजाइन कर दें, ठीक है ना, या ये है कि आफ्टर ऑल लीडर तो एक ही होता है ना। ये तो नहीं आप कह सकते कि जी लीडरशिप जो है उससे पीछे बाकी सारी जो किसी भी मुल्क के बाकी स्टेक होल्डर्स होते हैं जो उस मुल्क को चलाते हैं, वो खाली एक लीडर तो नहीं होता, खाली ट्रम्प तो नहीं चला रहा है ना। बिल्कुल। तो क्या वो प्रेशर नहीं डालेंगे कि जी आपके इस मॉरली कॉम्प्रोमाइज होने की वजह इसमें तो अभी उनके बहुत सारे मिनिस्टर इसमें कंप्रोमाइज हैं, वो कैसे डालेंगे? वो तो उनके मिनिस्टर्स बहुत सारे इसमें कंप्रोमाइज हैं। अरे जी, मिनिस्टर्स के अलावा भी तो इदारे होते हैं ना, आखिर उनकी भी डीप स्टेट भी है, एस्टेब्लिशमेंट भी है, जुडिशरी भी है, पब्लिक भी है। चंद मिनिस्टर और एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर तो सिर्फ आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, नहीं चलाते हैं, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। इंटरनल प्रेशर्स भी बहुत होते हैं, और एक बाज़-औक़ात टाइम आता है कि फिर खुद जो सेन वॉइसेस इन द स्टेट होती हैं, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, फिर वो उठती हैं। ये तो नहीं हो सकता कि वो बैठी रह जाती हैं। तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देखिए लोग लिख भी रहे हैं, वो लोग तो बाज़-औक़ात ये भी कहते हैं कि ये शायद जो मिड टर्म इलेक्शंस अब होंगे इस नवंबर में, उसके बाद शायद बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो ट्रम्प की बढ़ जाएं। ये भी उसकी हेल्थ भी इतनी ख़राब है कि उसकी वजह से भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स हो रहे हैं। अब उनको अल्जाइमर्स भी हो गया है, तो यहाँ तक भी बातें हो रही हैं कि ही इज इनकेपेबल, तो क्या पता। अच्छा, मैं आपको दोबारा आता हूँ आपकी तरफ, मैं आपकी तरफ आता हूँ दोबारा। हसन, सो व्हेन वी लुक एट वन साइड इज एटीट्यूड ऑफ यूएस इजराइल एंड दे आर द सपोर्टर्स, but on the other side, so if we look at what China is doing in Middle East, can you give us a little bit brief how the China is engaging with the Middle Eastern countries, including Iran and other Iraq and Saudi Arabia, everybody? Yeah, I think the Chinese are working, consistently on their, building up this whole new order I mentioned in partnership with nations of the global South, because they know that they should not rely on the United States and the EU. They should build their relations and their economic connections to the global South. And the whole Belt and Road Initiative is based on that, is to build in the Eurasian geographical, landmass and ecosystem, and then incorporate Africa into that picture to build a structure of connectivity, of economic development and diplomacy, to make sure that geopolitical games are no longer played.
And for example, strengthening the relationship with Central Asian nations, which has always been, the playground for the great game, Afghanistan and Iran. So one of the big developments that China contributed to is to have the normalization of relations between Iran and Saudi Arabia. That was a game-changing event, I think, in the Middle Eastern history. Yes, because much of the conflicts in the region were part of this, unfortunately, the Shia-Sunni divide. They tried to play on that game. And the Chinese managed to bridge that gap, not only with Saudi Arabia, but also with Egypt. Egypt is also a very important player, and now there is a very good normalization of relations between Egypt and Iran. But in all these relations, China is using its economic, technological, and industrial power to make these countries, to develop these countries' economies and connect them together. Like we have enormous investments in Saudi Arabia and in Egypt to industrialize the economy. And that the Saudis don't need financial Basically, support, it's a Chinese philosophy, dialogue and development. Yes. And through it, they also the philosophy of peace and security through economic development. Bilkul. They think if you don't have economically prosperous societies, you will always be unstable. If you don't produce enough food, if you don't have jobs for young people, if you don't have water, if you don't have electricity, you will be unstable politically forever. So this has been China's focus, and it's working, it's going steadily, despite all the problems that are created. We had the war in Gaza, but this did not stop the economic development of the region in the other countries, and it's accelerating. So this is a completely different ecosystem. How the people of Middle East look at China? What is their view about China? This has changed dramatically in recent years. Before that, there was this propaganda against China, like in Iraq, for example. We even had a regime change because the prime minister in 2019 went and signed major agreements with China to exchange oil for construction and for technology. He was actually overthrown in a color revolution. Okay. Yes, and Trump administration played a key role in that. The British and other powers in Europe played a role in overthrowing him. But now the view of China is changing because people can see that China has a completely different philosophy. It's not like the United States. It's not, and this whole debt trap thing is disappearing because it has no basis in reality. And they also see that the industrial development of China, the quality of products, like in the Gulf countries, we have Chinese cars, not only electric vehicles, but even conventional cars, are more popular now in the Gulf countries than European cars because they are as luxurious, but they are more efficient and cheaper. Yeah, so they are more, I think they have all the qualities what a consumer wants. So we are moving toward the end. End में मैं कि आप कुछ 1 or 2 minutes में अगर आप अपना कोई point of view देना चाहें आज की पूरी discussion पे 1 or 2 minutes quickly. जी देखिए दुनिया बड़ी तेजी से चेंज हो रही है और इस चेंज होती हुई दुनिया में हमें अब ये देखना है कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ है और हमें किस किस्म की अपनी फॉरेन पॉलिसी रखनी चाहिए कि हमारा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म तीनों इंटरेस्ट जो हैं वो सिक्योर रहें और हमारी डेवलपमेंट, हमारी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उस पर किसी तरह का असर ना आए और हमारी सिक्योरिटी और हमारी आर्म्ड फोर्सेस की कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो भी इतनी हमने साथ साथ बढ़ानी है कि हमें कोई अपना सिक्योरिटी पे कोई हमें थ्रेट ना कर सके, हमें किसी का खौफ ना हो. हाँ, तो आपने बिल्कुल बजा फरमाया. बहुत समझदारी से आगे बढ़ने की जरूरत है और हमें अपने शॉर्ट टर्म, एज आई सेड, शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को मिक्स नहीं करना चाहिए. हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमारे शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट क्या हैं और उसमें हमने किस तरह मैनेज करनी है चीजें, लेकिन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को हमें बिल्कुल अपने सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए. आपने बजा फरमाया. हमें अपने जो कि अपने मफादात हैं उन पे हमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. और क़ायद-ए-आज़म ने भी जैसे फरमाया था कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो फ्रेंडली है,
ہم ہر کسی کے ساتھ دوست ہیں, ہم کسی کے خلاف کوئی اگریسو بیہیویئر نہیں رکھتے, یا ہمارا کوئی انٹینشن نہیں ہم کسی پہ اٹیک کریں یا ہم اگریسر ہوں, مگر ہم اپنی جو کہ ہماری سوورینٹی ہے اور ڈگنیٹی ہے اس پہ بھی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. اور یہ ہم نے 25 مئی کو مئی 2025 میں ہم نے ثابت کیا کہ کوئی بھی ہمیں چیلنج کرے گا تو ہم آئیں گے. مگر ابھی جو حالات ہیں یہ تقاضا کرتے ہیں کہ بہت عقلمندی سے چلا جائے, کہ بہت فہم و تفہیم سے چلا جائے, نی جرک ریاکشن نہ دیا جائے. ہمیں صبر و تحمل سے چلنے کی ضرورت ہے. یہ جو ڈپلومیسی ہوتی ہے, گلوبس ہوتے ہیں, یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ دن کو کچھ ہوں رات کو کچھ اور ہوں. یہ بڑا لمبے عرصے تک چلتے ہیں, آہستہ آہستہ یہ چیزیں بلڈ ہوتی ہیں. یہی بات ہماری نیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ نہ کرے کہ بس فوراً کچھ کرو. نہیں, ڈپلومیسی اور اکنامک لنکیجز, یہ سارے جو ایشوز ہوتے ہیں بڑے تحمل سے, بڑی عقل مندی سے ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ابھی جو پاکستان کا سٹانس چل رہا ہے, پاکستان اپنے آپ کو ایک ایسی سٹیج پہ لے آیا ہے کہ ایک طرف ایران بھی ہم پہ اعتماد کرتا ہے تو دوسری طرف یو ایس بھی ہم سے بات کر رہا ہے, یورپ بھی بات کر رہا ہے. ایک طرف ہم اگر سعودی عربیہ کے ساتھ ہم نے ڈیفنس ڈیل کی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ترکی یا دوسرے بہت سے مسلم ممالک کی ساتھ ایسی ڈیفنس ڈیل کرنا چاہتے ہیں. کہنے مقصد یہ ہے ابھی جو ہماری پالیسی کا کنٹرول نظر آ رہا ہے وہ بڑا پرومزنگ ہے, مگر فیوچر کے لیے اسپیشلی اکانومی کو درست کرنے کے لیے شاید ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ایک چیز کو بڑا ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو کہ اکانومی کو اکانومسٹ ہی سمجھتے ہیں, بینکر یا اکاؤنٹنٹ نہیں سمجھ سکتے. جس کا کام ہے آپ اسی کو لگائیں اس پہ. بہت مہربانی دیکھنے کا ہمارا پروگرام آج کا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.